Acha, chaliye, let's start the class. Today we are going to start a new topic, and this is about strain measurement. And the topic is covered in chapter 11 of textbook Figliola by Figliola. So, what is strain measurement? By basic definition, strain, we know that change in length per unit length is defined as strain. Okay. So there are different techniques for measurement of strain. We can broadly divide them into two categories. One is full field methods, and the second one is point measurement. Okay. Now, full field measurement से मुराद क्या है? आप में से कितने लोगों ने एनसिस वगैरह स्ट्रेस एनालिसिस की है या स्ट्रेन एनालिसिस की है? आप में से कुछ स्टूडेंट ने एनसिस यूज किए? स्टूडेंट्स नहीं यूज किया. अच्छा, लेट मी सी. Let me see if I can find some NSYS related picture images. ठीक है. For example, let's take this image. Let me now share this with you. Window. अच्छा, अभी ये फिगर आप लोगों को नजर आ रही स्टूडेंट्स? तो देखें, अगर इफ यू सी इट, ये एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एंड आई डोंट नो, मैंने जस्ट अभी वेबसाइट पे सर्च किया. आई डोंट नो व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज और व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, बट इफ यू लुक एट इट, आपको डिफरेंट कलर्स के शेड्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें. किसी को अंदाजा है? ये फिगर देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये शेड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सर, ये मैक्सिमम और मिनिमम के क्राइटेरिया को शो करते हैं. हाँ, जरा जरा जो नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे जो गिवन है स्केल, जरा इसको पढ़ के मुझे बताएं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर, कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं लेकिन पढ़ने नहीं हो रही, बहुत छोटी हैं. अच्छा, so I can read it for you. It is basically one mysis stress. ठीक है, one mysis stress है, और फिर red signifies some higher value, blue signifies some smaller value. So अब इस one mysis, if the color shade represents different values of one mysis stress, तो इस ऑब्जेक्ट कि अब कलर शेड्स को देख के आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ये रेड स्पॉट्स क्या हैं? सर, ये मैक्सिमम स्ट्रेस को शो कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम स्ट्रेस है. हाँ, इन पॉइंट्स पे स्ट्रेस ज्यादा है. और ब्लू पॉइंट्स क्या हैं? इन पे मिनिमम स्ट्रेस पड़ रहा है. हाँ, रिलेटिवली इस पे कम. जो फुल टोटल ब्लू है वो मिनिमम है, जो एक्सट्रीम रेड है वो हाईएस्ट है, और दरमियान में जो डिफरेंट शेड्स हैं, इज द वैल्यूज बिटवीन दैट. नाउ a full field strain measurement will give you a information similar to this
figure is giving to you. मतलब आपको पूरे एक फील्ड के अंदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो स्ट्रेन वेरिएशन होगी वो आप देख सकेंगे. समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट्स? और पॉइंट स्ट्रेन मेजरमेंट क्या होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेड स्पॉट है, अगर सिर्फ मैं इस एक पॉइंट में स्ट्रेन मेजरमेंट में इंटरेस्टेड हूं तो उसके लिए सेपरेट मेथड है. और अगर मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन मेजर करूं और इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन की वेरिएशन कैसी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन का प्रोफाइल कैसा है, तो अगर वो मैंने मालूम करना है, फॉर दैट आई विल यूज अ फुल फील्ड स्ट्रेन मेजरमेंट टेक्निक. क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर, क्लियर. अच्छा ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और ठीक है, सो full field methods include optical interference, Moyer method, holographic method, interferometric method, brittle coating, grid grid and rulings, photoelastic methods. These are all full field methods for strain measurement. The point methods of strain measurement include bonded electric resistance gauges. This is what we will be studying in our course. ठीक है? Extensometers or clip gauges, and there are some other point measurement techniques as well. But in our course, we will only study bonded electric resistance strain gauges. From now on, when I say strain measurement method, in at least in our lecture, we are referring to the bonded electric resistance strain gauges. ठीक है, इस स्लाइड में आपको बेसिकली एक ओवरव्यू गिवन है कि आप जो पढ़ रहे हैं, of course this is a very common way of measuring strain, but there exist many different methods, many other different methods which are also used for strain measurement, and you should be aware of them. Okay. So basic strain measurement, from the definition, we must measure a change in length or some specific base or gauge value. Fundamentally, a displacement measurement. Fundamentally, strain measurement is a displacement measurement, and it must define, for it, we must define gauge length. Strain is computed over a gauge length. Smaller gauge length gives you better geometric precision. Larger gauge lengths increase sensitivity by allowing larger displacement for the same strain. Okay. So what is our gauge length? Gauge length is our initial length. Okay. Before we apply the forces F. Okay. So we define certain base lengths. We take a piece of, we basically define certain locations on the object whose strain that we want to measure before we apply the loading on the object. Okay? And that length will be called gauge length. Okay? Or the base length. After that, we apply loading on the object, and of course, the length, depending on the loading, if it is tension, the gauge length will increase. Now, this, of course, is your extension or delta L, okay? And this is your L naught, and delta L is equal to L minus L naught, where L is your final length value. ठीक है? All basics. आप पहले ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. If you have any question, you can ask me now. No? So I'm moving forward. Okay, so electric resistance strain gauges. So before going into this slide, let me
discuss the basic principle of electric strain gauges. So let's put in a for example, if I have a circular rod, okay, of some metal, okay, and I basically connect a ohm meter to this rod, okay. Now now this rod will have certain resistance. Let's call it R naught, okay. It can be, if it's a metal, of course, it probably would be a conductor, and it will have some resistance value, small resistance value, or large, depending on the size of this rod. So let's give it some arbitrary values. For example, it is a 10 centimeter long and 1 centimeter dia. Okay. Now if we apply some tensile force on this rod, what will happen? That the rod length will increase. Okay. And the diameter will reduce. And the length will increase. And because of that, its resistance will change. From R naught, it will change to some R value. Okay. And the difference, delta R, which is R minus R naught, will correspond to the strain, delta R will correspond to delta L. So we can say that delta R over R will be related, okay, will be function of delta L over L. Okay. Does it make sense? Is it clear? Any question so far, students? अच्छा, कौन बताएगा कि लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाता है? कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए हमारे पास मौजूद है, which relates lengths with rho into L divided by area. A, which is the cross-section area. So length increase होने से resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross-section area. So in this case, जब हम इसके ऊपर loading apply कर रहे हैं, तो ना सिर्फ length increase हो रही है, but at the same time cross-section area भी decrease हो रहा है, and that's why we see change in resistance. ठीक है? Now, once you know this basic principle, now a simple type of strain gauge, we can apply, create a simple type of strain gauge based on this principle. Okay, so what we do, very simple, ठीक है, जो कि practically use नहीं होता, but at least in principle you can use it as a strain gauge. ठीक है, for example मेरे पास ये वही metal bar है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं कोई एक लोडिंग अप्लाई करूंगा, ठीक है, और उस लोडिंग की वजह से इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसकी मेजरमेंट में मैं इंटरेस्टेड हूं. सो व्हाट आई डू, I put this metal wire, and it can be very thin diameter wire. Maybe it's like a 6-inch long, but only 0.1 inch cross-section diameter. Okay?
And I place this wire, I basically epoxy this wire on this piece of metal such that there is electrical insulation between the wire and the metal piece on which this wire is placed. So let's say it's a copper wire, and this is steel. Okay. And now I have affixed this copper wire on top of a steel rectangular cross-section bar such that there is no electrical conduction between the copper wire and the steel bar. Means it is epoxied to the surface using a type of epoxy that is non-conductive. Okay. Now, if I apply certain load on this steel bar, okay, before I apply load, let's say I haven't applied any load. So what I'll do, I'll connect this to a ohm meter. Okay. And of course, it will have this gauge length will have some resistance. Okay. And whatever that may be, it might be 120 ohm. Typically, it's 120 ohm, 350 ohm, or 1000 ohm, but it can be any value. Okay. So let's say it's a 120 ohm for. Okay. Then after that, I apply some loading on the steel bar. What will happen? Because of external tensile force, the dimensions of the steel bar will change, its length will increase, and its cross-section area will decrease slightly. And because of that, if this is my R naught, the new value of R, now if I measure, if again I measure the resistance, with the change in length of the steel bar, the copper wire length also increases by the same proportion as the steel bar itself. And of course, its diameter will also decrease. And this will result in some resistance change. Let's suppose it is 0.1 ohm. Let's suppose this is 0.1 ohm. Now from this, if I know this relationship, so delta R, let's suppose delta R. So if I know this thing, delta, we know that delta R by R naught is a function of delta L by L naught. If I know this, if I have an equation that relates change in resistance to change in length, then by measuring change in resistance value, I can measure change in length value. Or by measuring change in resistance, delta R by R naught is a function of strain. So by measuring delta R by R naught, I can find out the value of strain. If I know the strain value, of course, I can use this strain value to find stress, where stress will be equal to, from Hooke's law, modulus of elasticity into strain. See, if I know the material property and I measure strain value from this equation, then I can find out stress. Okay. Similarly, if I'm interested in finding out an unknown force, if I'm interested in finding the value of force applied that resulted in this much amount of strain or this much amount of stress, I can use the stress formula, which is sigma is force per unit area, where cross-section area. So if I know the value from measurement, if I find the value of sigma, and I know the cross-sectional area of the
metal piece, then from there I can find out the unknown force. Clear, student? Yes, sir. Any questions? Any question? जी. बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अभी हम थोड़ी देर में जब हम पढ़ेंगे जिसमें हम जो टिपिकल स्ट्रेन गेजेस होते हैं, हर एक स्ट्रेन गेज की डेटा शीट पे लिखा होता है कि आप ये स्ट्रेन गेज इतनी स्ट्रेन के लिए यूज कर सकते, इससे ज्यादा के लिए जाहिर है वो, जैसे एनी इंस्ट्रूमेंट हैज ए अपर बाउंड ऑफ फॉर विच इट कैन बी यूज्ड, अपर बाउंड ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर विच इट कैन बी यूज्ड. Similarly, strain gauge will have an upper bound of strain value beyond which strain gauge will not work. Okay. Any other questions, students? Okay. So let's move forward. Okay, so Lord Kelvin had the first idea about resistance and resistivity. First practical and patented strain gauge appeared in 1938. Simmons and Rouge developed it independently. It was a bonded wire gauge called SR4 gauge for many years, bonded with nitrocellulose cement. ठीक है? समझ आ रही इस बात की? एनी क्वेश्चन? शुड आई एक्सप्लेन इट? ठीक है, देखिए टिपिकली हमने जो अभी डिस्कस किया, हमने कहा था कि एक सिंपल वायर ले लें. ठीक है, अब एक सिंपल वायर की सेंसिटिविटी कम होगी. ठीक है, सेंसिटिविटी इसलिए कम होगी क्योंकि वी नो दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ लेंथ. ठीक है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ा है कि जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतने ही सेम स्ट्रेन के लिए उसकी चेंज इन रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ज्यादा आएगी. ठीक है, जितना चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा उतना चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो जितना चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको मतलब चलें, let's do it like this. For a strain gauge, if I have to calibrate this strain gauge, ये जो अभी कॉपर के strain gauge मैंने यूज किए कॉपर वायर की. ठीक है, if I have to calibrate this strain gauge, ठीक है, तो calibration, what is calibration process? Students, कौन बताएगा? Very good, very good. For a measurement instrument, calibration defines the input-output relationship. Or by calibration, we develop a relationship between input and output of the measurement instrument. ठीक है, so हमारे पास एक ग्राफ होगा जिसके x एक्सिस पे हमारे पास इनपुट है और y एक्सिस पे उसका आउटपुट है. ठीक है, नाउ इनपुट पे स्ट्रेन गेज का इनपुट क्या होगा? स्ट्रेन गेज नाम से आपको पता चला है. व्हाट इज इनपुट टू द स्ट्रेन गेज? स्टूडेंट्स, एनीवन? सर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी वजह से लेंथ में चेंज आएगा. हाँ, लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन स्ट्रेन गेज किस चीज को मेजर कर रहा है? अरसलान? स्ट्रेन को सर. तो स्ट्रेन गेज का इनपुट क्या है? स्ट्रेन. वेरी गुड, स्ट्रेन. अच्छा, स्ट्रेन गेज का आउटपुट क्या है? कौन बताएगा? स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस सर. चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके सर. ठीक है, change in resistance that corresponds to, so typically when we want to calibrate a strain gauge, then the input to the strain gauge is strain or change in length per unit length,
and output of the strain gauge is change in resistance per unit resistance. Okay. Now, now if I going back to that example, okay, let me try it very quickly again one more time. ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक वायर की लेंथ लगा लूं, ठीक है, सो या इसके बजाय अगर मैं यूं कर लूं, इस वायर को यूं लगा लूं, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, my question to you is, students, this is gauge 1 and this is our gauge 2, ठीक है। किस गेज की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी? मतलब इसको भी ओम मीटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं और इसको भी ओम मीटर के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूं। सो for the same change in length, per unit length, which gauge will have higher sensitivity? Gauge gauge 2. 2. Very good, gauge 2. So how do you define sensitivity? Sir, the slope of a curve. Slope of the calibration curve. Very good. बहुत बिल्कुल ठीक है. So why does gauge 2 has higher sensitivity? हाँ, लेकिन ये वायर को इस तरह से वाइंड करने से इसकी हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि लेंथ हमारे पास जो है टोटल लेंथ ज्यादा हो गई है, ठीक है, और फिर चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब ये है इस तरह से लगाने से इट इज इक्वलेंट टू कि आपने इस तरह के ये सिंगल वायर की तरह के आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 गेजेस, तो मतलब है ये जो हमने हमने वाउंडेड वायर जो यूज किया है, तो इसका हर एक सेगमेंट जो है एक सिंगल गेज की तरह बिहेव करता है, और इस कंपेयर टू इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, और टोटल गेज का जो आउटपुट है दैट वुड बी रफली 8 times द आउटपुट ऑफ द सिंगल वायर गेज, ये जो नॉन वाउंड वायर हमने यूज किया। क्लियर है ये स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, now do you know what does, since there is a specific word, so this will be our calibration curve. So gauge 1 will have calibration curve like this, gauge 2 will have calibration curve like this, gauge 1 and gauge 2. Now the sensitivity of the slope of the calibration curve, also called sensitivity of the calibration curve, is called gauge factor for a strain gauge. ठीक है, gauge factor. Clear? ठीक है। सो जब कभी आप स्ट्रेन गेजेस में आपके सामने गेज फैक्टर की टर्म आती है, सो you should know now that gauge factor is nothing but sensitivity of the gauge, and sensitivity of an instrument is defined, of a measurement instrument is defined as the slope of the calibration curve of that instrument. Clear? Okay. So now do you know why we have a strain gauge
of this configuration rather than a straight wire. समझ आ रही? ठीक है? Okay, next, just like in the previous case, we do not want the strain gauge, most of the time, we want a strain gauge to be electrically isolated from the test sample whose strain we want to measure. ठीक है? इसकी रीजन क्या है? कौन बताएगा? Students? Anyone? हम क्यों चाहते हैं कि स्ट्रेन गेज और जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है उसके दरमियान इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ना हो? एनीवन? आदिल? सर स्ट्रेन गेज और जो हमारा वो मेटल बार है उसकी कंडक्टिविटी शायद चेंज हो। नहीं, उसकी रीजन ये देखें, हम वी वांट टू मेजर एक्यूरेट रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज. ठीक है? अब अगर ये स्ट्रेन गेज और मेटल आपस में कंडक्शन कर रहे हो तो फिर तो आप इस वायर की रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते ना. ठीक है? फिर तो आप अगर मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा तो वो तो इस वायर प्लस सैंपल मटेरियल, क्योंकि कुछ करंट जो है वायर में फ्लो होगा और बाकी करंट जो है जो हमारे पास जो टेस्ट सैंपल मटेरियल है उसमें से कंडक्ट होगा. सो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेज. अरसलान? क्लियर है सर जी? क्लियर है? ठीक है? यस. For that reason, can you tell me why are we encapsulating the wires in this paper? क्यों हम encapsulate कर रहे हैं? Students? सर यही वजह है कि अगर हम उनको मतलब पेपर्स में इंसुलेट ना करें तो वो उनके साथ कंडक्शन आएगा और जो हम मेयर करते हैं ना तो वो जो रेजिस्टेंस चेंज आएगा वो मेटल बार और जो हमारा स्ट्रेन गेज का जो स्ट्रिप है वो उसका कलेक्टिव होगा. बिल्कुल सही है. So this is one reason usually your strain gauge will be encapsulated in most of the time in some non-conductive material. ठीक है? और उसकी रीजन ये है क्योंकि otherwise we will not be able to measure the resistance change of the strain gauge. ठीक है? अगर strain gauge wire और सैंपल टेस्ट सैंपल जिसका स्ट्रेन हम मेजर करना चाहते हैं अगर उन दोनों के दरमियान कंडक्शन हो रही है तो फिर हम स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. ठीक है? दैट्स वन रीजन. देयर इज अनदर रीजन. ठीक है? वो ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वी एपॉक्सी द वायर ऑन द टेस्ट सैंपल. ठीक है? अब मुझे यह बात बताएं कि वायर को एपॉक्सी करना आसान है या इस तरह की फ्लैट सरफेस, पेपर सरफेस या प्लास्टिक सरफेस जिसके अंदर मेटल फॉयल मौजूद हो या मेटल गेज मौजूद हो उसको एपॉक्सी करना आसान है, फ्लैट सरफेस को या एक वायर को या वायर को एपॉक्सी करना आसान? स्टूडेंट्स सोचें. आदिल सर फ्लैट सरफेस को. हाँ, फ्लैट सरफेस को एपॉक्सी करना आसान है. सो देयर इज अ second reason why we encapsulate the metal foil in इस particular case में तो जो है हमारे पास thin paper है, but we will discuss that. This is called backing material. ठीक है? There is a third reason for that. ठीक है? Typically आपकी strain gauges जो है वो बहुत delicate होती हैं. ठीक है? If it is exposed, if it doesn't have protective cover, ठीक है? अगर ये protective cover ना हो, so there is a good possibility that it will get damaged very easily. ठीक है? So let's come back to this slide. So metal foil gauges, they are die cut or lithographic
and wide variety of fine. So this is your original gauge. Okay, it was a simple wire, okay, which was enclosed in a protective thin paper pieces. This is your modern gauge. Okay, now your modern gauge doesn't use a round wire, rather it uses a metal foil. आप एक metal foil लेते हैं, thin metal foil, and then this wire pattern is etched in that metal foil. उसके अंदर etched कर दिया जाता है. ठीक है, etching process आपको पता है ना? You kind of like drill on it. ठीक है, इस मेटल फाइल में आप इस तरह से हल्की हल्की ड्रिलिंग करते ताकि इसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर पाथ रह जाए और बाकी मटेरियल जो है वो इच हो जाए या हटा लें. सो यू कैन डू इट थ्रू डाया कटिंग और थ्रू ए लिथियोग्राफिक प्रोसेस. यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, दिस इज योर गेज, और ये मटेरियल जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर backing material, gauge backing material for protection. Okay. Now this is your standard single strain metal single strain gauge. Now you can have, this is a single strain gauge, this is a single strain gauge, of course. These are called rosettes. Okay. These are multiple gauges. For example, in this case, you have 2 gauges, 1 and 2, and both the gauges. So in gauge, there is a axial direction. This is the axial direction of the gauge. This is the direction of the gauge. This is the direction of the gauge which measures the strain gauge. And of course, it will have a transverse or lateral direction. Okay. Typically, strain gauge is designed to measure strain gauge only on its axis or in the axial direction and ignore strain in the transverse direction. Okay. But if you are interested, so the strain gauge is most sensitive to strain in the axial direction, and by design, it is least sensitive to stress in the lateral direction. But if in case you want to measure strain gauge, you want to have a strain gauge that gives you sigma or strain X and strain Y. Okay, you want to measure strain in the X direction, or you want to measure in 2 axes perpendicular to each other, then in this case, if you look at this diagram, this is your X. This gauge will measure this strain. Let's call it strain X. And this gauge will measure this strain. Let's call it strain Y. So this combination strain gauge, or this rosette strain gauge, which is a combination of 2 strain gauges, will measure strain perpendicular strains, strain X and strain Y. Clear yahan tak, students? Student? Okay. So what is this? This is a combination strain gauge. What is a term that is used for this type of strain gauge configuration? इससे क्या कौन सा term use होता है, student? अभी मैंने जिक्र किया है. Rosette strain gauge, sir. Rosette. ठीक है? Rosette strain gauge. Now, this rosette strain gauge is comprised of how many strain gauges? 3. 3. Very good. ठीक है? बिल्कुल सही. And can you tell me, in this configuration, the 3 strains that this rosette is measuring, can you tell me about those 3 strains? Sir, XYZ. XYZ तो नहीं है, ये प्लेन strains है. ठीक है? प्लेन में, so basically equivalent, ये तमाम एंगल्स बराबर हैं, आप देख सकते हैं ना. ठीक है? So आप
360 डिग्री को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल्स कितने रह जाएंगे? 120 नहीं, 180 तो नहीं है, वो तो 2 पार्ट्स में हो जाते। 360 डिवाइड बाय 3 120 sir. 120. 120. So this configuration of strain gauges, or this rosette, will measure you 3 strains at 120 degree apart from each other. Okay. Now this rosette. Now it's difficult to tell how many strain gauges are in this rosette. Okay. This is a special type of a rosette, and it is called diaphragm rosette. From rosette. Okay. Now, what does this diaphragm rosette does? For example, if you have a pressure, some pressure vessel, and you connect a pressure transducer. A pressure transducer एक पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, and you are interested in measuring the pressure, ठीक है. Now of course you can use a mechanical pressure instrument, a dial gauge, or you can use a electrical transducer or electrical measurement instrument. Okay. So what is the function of that electrical? So there would be a diaphragm. There will be a diaphragm, a circular diaphragm, okay, inside that instrument. And on top of that diaphragm, this rosette will be bonded with diaphragm. As the pressure increases, what will happen to the diaphragm? It will concave. ठीक है. जब ये concave होगा, what will happen to this rosette? Its resistance will change, ठीक है, because of concavement of the diaphragm. And if we measure this resistance, we can we can calculate the pressure experienced by the diaphragm. इस बात की समझ आ रही है, students? ठीक है. So just to give you an idea, in this slide, we saw the very rudimentary strain gauge. Okay. Then we discuss the modern strain gauge. Then we discuss single strain gauges and multiple strain gauge configurations called rosette. And finally, we discuss special type of rosette, which is called a diaphragm rosette, which typically is used to measure deflection of a diaphragm. And then we can use that information in multiple scenarios. One of them is measuring pressure, using this technique to measure, using this technique in a pressure transducer to measure pressure. Okay. So rosette gauges, by making simultaneous measurement of strain in different direction at a point, it is possible to determine the state of strain, that is strain 1, strain 2, and 5. From up till now, you should know that strain gauge measurement is a plane measurement technique. Okay? Plane measurement techniques. You typically, when you apply a strain gauge, it gives you strain on that plane जिस पे आपने strain gauge apply किया हुआ है.
ठीक है? From 3 independent extensional strain reading, one can develop 3 equations to solve for strain 1, strain 2 principal strains, and from this to determine strain X, strain Y, and strain XY in any direction. Okay? Now we are going to go into details of the strain gauge. If you look here, a strain gauge has gauge material, then there is backing material. And so we will discuss those. And of course, to use strain gauge, you need to use some sort of a bonding technique. So right now, we will go into those details. So first thing is gauge material. It's the actual foil material or the wire material. We are talking about this material. So gauge material. Now, gauge material, there are a wide variety of metals which can be used as gauge material. And of course, they have different strain sensitivity, fatigue performance, criteria of maximum extension. One of the student ने जो पहले question पूछा था कि सर एक limit होगी, so that is your maximum limit. So it's different for different gauge materials, and of course temperature. Also, electric resistance. Strain gauges can be divided into 2 types of electric resistance strain gauges, just like resistance thermometry. There are metal strain gauges, and then there are semiconductor strain gauges, just like an RTD, which is a metal resistance temperature instrument, and a thermistor, which is a semiconductor resistance temperature instrument. So now this graph, so the different materials, you can use nickel, you can use Constantan, you can use ferroalloy, you can use 40% gold and palladium, you can use 10% rhodium and platinum. So these are the different materials that can be used for strain gauge construction as gauge wire. And these are the characteristics. In this table, you're given the characteristics of maximum operating temperature. If you want to use a strain gauge for a temperature above 900 degrees C, then you can only use these 3 temperature, either nichrome, okay, iridium, platinum, or the karma instrument. So here's the different things you need to be before you select. In the process of selection of a strain gauge wire material, you can consult this table, and it will give you an idea of which type of a strain gauge metal material should you use. Okay. Now the gauge backing material. जी यहाँ पे जो सर जो गेज फैक्टर है यहाँ पे निकल के लिए -12 है, इसका सर अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें गेज फैक्टर का। पहले ये मतलब डिक्रीज हुआ है तो कुछ वैल्यू के बाद ये दोबारा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, I didn't know actually. I didn't realize that. ठीक है, I'll look into it. ठीक है, typically आपकी gauge factors positive होते हैं. I'll have to look into it. ठीक है? Okay, sir. Now, the second part, in the last slide, we discussed the gauge material. Now we will discuss the backing material. इस material की बात कर रहे हैं. ठीक है? जिसमें gauge metal enclosed होगा. Now, this backing material is provided by different gauge manufacturers. So you can use foil on epoxy, you can use foil on
phenol impregnated fiberglass, you can use strippable foil or wire, or you can use unbonded free element. Okay? So there, and for each type of backing material, the manufacturer will provide the type of epoxy that you should use. So if you choose, again, it will be for the temperature. This would probably be your selection criteria. So if you're using the strain gauge for -75 to 95 degrees C, then probably you will be using this type of foil on epoxy. This is your standard strain gauge. इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? So foil on epoxy. What just happened? Okay, so this will be your foil on epoxy. Okay. Then there are certain strain gauges which are unbonded. Okay. Unbonded means it's the wire is not encapsulated. Okay. And these type of strain gauges are specially used for very high or very low temperatures measurement. Okay. So you can, for short test, again, this value is for short test, means for not for a long duration. And again, the more details will be provided by the manufacturer कि आप कितनी duration के लिए इसको up to 1000 degree centigrade के लिए use कर सकते हैं, or this one for up to 1200 degree C के लिए. But your most common type of strain gauges are foil on epoxy and the recommended adhesive. Why do we need backing material? It electrically isolates metal gauges from the test specimen, transmit the applied strain to the sensor. Transmit the applied strain to the sensor से क्या मुराद है कि ये हमारे पास टेस्ट स्पेसिमन है, टेस्ट स्पेसिमन के ऊपर स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, लेकिन स्ट्रेन गेज जो है एक बैकिंग मटेरियल के अंदर इनकैप्सुलेटेड है. तो जो स्ट्रेन इस सैंपल में प्रोड्यूस हो रहा है, it need to transfer to the wire inside the strain gauge. So the backing material should transmit the applied strain to the sensor. से मुराद क्या है? ये wire inside the backing material, जो कि metal wire होता है, strain gauge wire है, उससे मुराद यहाँ पे sensor है. ठीक है? Backing provides surface used for bonding with an appropriate adhesive. Backing materials are available for temperature that ranges from 0 degrees C, I think this is 0, to -270 degrees C up to 290 degrees C. But what about higher temperature? In those temperatures, we do not use backing material. Rather, we use the metal wires, directly onto the test sample using some sort of a high temperature epoxy, usually a ceramic epoxy. ठीक है. Now, जी. हाँ, उसके डिफरेंट वो होते हैं, आप तरीकों से कर सकते हैं. देखिए, एक सिंपल वो तो ये भी हो सकता है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. एक मिनट, लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट, डोंट सेव and open it one more time. Just one moment, please. Lectures.
अच्छा, ठीक है, अभी आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी नजर आ रही? यस सर। ठीक है, so let me share an unbounded window. Share now. अच्छा, can you see it now, students? आपको कोई स्क्रीन नजर आ रहा है? Figure, can you see the figure? Okay, can you see the difference between the two now, bonded and unbonded? Students, ठीक है, अनबॉन्डेड में ये होता है ना, ठीक है, लेट मी, ये फिगर अभी आप नोट कर लें, देन आई विल ड्रा इट फॉर यू. सो how would an unbonded strain gauge be in simple terms? A unbonded strain gauge would be something like this. हम मिसाल के तौर पे एक नॉन कंडक्टिव एक ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं उस पे, बॉडी पे, सैंपल बॉडी पे, और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे फिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे नॉन कंडक्टिव सम सॉर्ट ऑफ ए नीडल, ठीक है, और फिर इन दो नीडल्स के दरमियान जो है हम अपनी गेज वायर्स कनेक्ट कर देते हैं. समझ आ रही है इस बात की? और फिर इन गेज वायर जो है उसका हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट. अब क्लियर? ठीक है, ओके. सो अप टिल नाउ अब तक हमने जो पढ़ा है उसका खुलासा क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल when we say we want to measure strain gauge, ठीक है, we first of all have to look into whether we are interested in measuring strain gauge at a point or strain gauge of a full field. ठीक है, based on that there are different types of strain measurement techniques. We divide them into two broad categories. One is field strain measurement, the other one is point strain measurement. In this chapter, in our course, we are only going to study point strain measurement, and even in that we will study point strain measurement with the help of a electric resistance strain gauges. Now, electric resistance strain gauges can again be divided into two categories: metal electric resistance strain gauges, and semiconductor electric resistance strain gauges. ठीक है? Then we discussed how is a strain gauge, or what is the structure of a strain gauge, and we saw that there can be, broadly we can say that three components of a strain gauge. Number one is the actual
metal, if so far we have discussed only metal electric resistance gauges. So for a metal resistance strain gauge, there will be the metal wire or foil part. Then there will be backing material. And third, it will be the epoxy, if it is a bonded strain gauge. So the construction of a we can divide the construction, or we can say that there are three important parts to a metal resistance, electric resistance strain gauge. Of course, the first one is the metal wire itself. The second one is the backing material. The third one is the epoxy that is used. Now, all these three work in combination, okay? And the manufacturer puts a lot of research in selecting the best metal wire, the backing material that is suitable for the application range, and the epoxy that will work for different applications. Okay. If you have no questions so far, then I'll move to the next section, which is how to install a strain gauge. Any questions so far, students? Okay. No, sir. Okay, so no question. I'll move forward. Now, the first, so when we want to install a strain gauge, it is quite arduous process. Means it takes quite a bit of work, and you have to be very careful, because if you make error or mistakes during the installation process, the reading that you will get from your strain gauges may not be accurate, or you may not even get any readings at all. Okay? Now, it is very important for the strain gauge to be in good contact with the specimen. If the contact or the bond between the strain gauge and the specimen is not good enough, then the strain experienced by the specimen will not transmit to the gauge. Okay? And you will not get accurate reading of strain in the material. Now, for that reason, before you apply strain gauge, you need to prepare the surface of the sample or the specimen whose surface strain you want to measure. And for that, it will depend on which type of gauge you have and the recommended adhesive material that is recommended by the gauge manufacturer. Okay? So for that, what we will do, first of all, you will have to do cleaning. And again, it's a multi-step process. So first we will clean it in the axis. Typically, we'll rub it in the same axis in which we are installing the strain gauge. So first process हम क्यों कर रहे हैं, cleaning क्यों कर रहे हैं, और cleaning हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं. For example, उसके ऊपर rust हो सकता है, surface पे rust हो सकता है, contaminants हो सकते हैं. ठीक है, contaminants में क्या हो सकता है, greasy materials हो सकता है, कोई और मतलब surface. So you need to make sure the surface do not have any rust, the surface is plain, the surface is smooth, and the surface doesn't have any foreign particles or loose particles or any foreign substances, especially any sorts of oils. ठीक है, so उसके लिए हम क्या करेंगे कि we will usually use a grit paper, ठीक है, और abrate, ठीक है. So जो हमारे पास emery paper होता है, ये grit paper होता है, उसके ऊपर 400 grit size paper, उसकी मदद से, जिसे आम जबान में रेगमाल कहते हैं, उसकी मदद से पहले आप surface को, ठीक है, साफ करेंगे ताकि जो loose particle और rust
ऑन द सरफेस हो वो आप हटा सकें। उसके बाद जो है आपने ऑफ कोर्स उसकी क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग अगर आपके पास और कोई प्रोफेशनल कंपाउंड्स मौजूद ना हो क्लीनिंग के लिए, तो इवन यू कैन यूज सिंपल रबिंग अल्कोहल या जो स्पिरिट होता है उसकी मदद से आप क्लीनिंग करें। सो पहले आप इकमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसकी स्पिरिट से सफाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इफ यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली, ठीक है, ये जो मैं आपको ग्रेट और अल्कोहल से क्लीनिंग बता रहा हूँ, ये अगर आपके पास मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड सप्लाईज मौजूद ना हो तब आप ये करेंगे। जब आप कोई स्ट्रेन गेज यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपको पूरी उसकी डेटा शीट मिल जाती है, उसमें आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिकमेंडेड प्रोसेस या रिकमेंडेड सप्लाईज भी आपको मिल जाएंगी कि आपने इस तरीके से सरफेस प्रिपरेशन करना। अगर डेटा शीट में नहीं मौजूद तो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट या उसकी कैटलॉग्स में मौजूद होते हैं। एंड दीज थिंग्स कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आपने जर्नली यूज करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट these expensive supplies, then you should start with a fine grit paper around 400 grit size. उससे आपने सरफेस एब्रेशन कर लेनी है ताकि सरफेस से लूज पार्टिकल्स रस जो है वो सरफेस से आ जाए और आपके पास एक स्मूथ प्लेन सरफेस आ जाए। हेलो। जी सर। अच्छा, आप कहाँ तक मेरी बात आपने नहीं सुनी? स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, चले चले, थैंक यू, बस ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ठीक है, नेक्स्ट सर जो ये है, जी जी पूछें। सर अगर हमें कर्व सरफेस के ऊपर स्ट्रेन फाइंड करना हो तो सर वो किस तरह करेंगे सर? वहां पर स्ट्रेन गेज को मतलब सर इंस्टॉल कैसे करेंगे? कर्व सरफेस पे तो कोई मसला तो नहीं है, क्यों कैसे प्रॉब्लम? क्योंकि ये स्ट्रेन गेजेस होती हैं ज्यादातर फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो मेटल वायर है वो तो वैसे भी फ्लेक्सिबल, क्योंकि वायर तो फ्लेक्सिबल होता है, और जो बैकिंग मटेरियल होता है टिपिकल आपकी जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं उसके बैकिंग मटेरियल जो है इट्स लाइक अ प्लास्टिक, तो उसको आप अच्छी खासा मतलब है इट कैन बेंड सिग्निफिकेंटली। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नाउ नाउ ग्लूइंग टू द सरफेस से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल में यहाँ पे डायग्राम में मौजूद नहीं है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर तो ये टेस्ट स्पेसिमेन है जिसका स्ट्रेन मैंने मेजर करना है, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन द स्ट्रेन गेज टू द एक्सिस, टू द सेम एक्सिस कि जिस एक्सिस में हम स्ट्रेन मेजर करना चाहते हैं। क्यों? अगर आपने मिस अलाइनमेंट कर ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर द स्ट्रेन गेज इन दिस एक्सिस और आपने स्ट्रेन गेज में एग्जेजरेट करो, आपने स्ट्रेन गेज यूं लगा ली। नाउ दिस स्ट्रेन गेज इज नॉट मेजरिंग दिस स्ट्रेन,
it is measuring strain in this axis. Okay, so it is very important. It is very important that you clearly identify the axis of strain that you want to measure. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम दोबारा स्ट्रेन गेज पे आ जाएं, ये आपको ये एरोज नजर आ रहे हैं? Yes, Okay. sir. Now these are for alignment purposes. These are for alignment purposes. Alignment purposes से क्या होता है? For example, जिस sample के ऊपर any sample whose कि जिस पे मैं strain measure करना चाहता हूँ, so it is very important that you mark the axis on the sample. ठीक है? So for example, मैं axis अपने लिए mark कर लेता हूँ. ठीक है? And then even put the transverse axis or lateral axis. ठीक है, दो axes मार्क कर लें. ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर स्ट्रेन गेज लगाएंगे तो ये वाले फ्रंट वाले जो दो एरोज हैं, these two, ठीक है, you need to align them with this. So this is the arrow. ठीक है, और जो बाकी दो lateral जो दो arrows हैं, you will be aligning those arrows कहाँ चलेंगे? Yes, so you will be aligning those arrows in here. ठीक है, and once you align them, ठीक है, then you can be sure of कि आपके पास जो strain आ रहा है वो इस axis के लिए आ रहा है. ठीक है, अच्छा, now this process of alignment is we do it in a special way. So what we do is we take a transparent tape. ठीक है, this is the transparent tape. ये transparent tape है, और फिर इस transparent tape के जो sticky side होता है, sticky side पे हम अपनी जो strain gauge है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं, टेप के साथ अटैच कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम इस टेप को यूं ओरिएंट करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेन गेज के एरोस जो हैं वो जो एक्सिस, दो एक्सिस जो हैं, ठीक है, एक्सियल और लैटरल, उन दोनों एक्सिस के साथ अलाइंड हो जाए. ठीक है, एंड दिस इज यू विल गिव इट मल्टीपल ट्राई. जरूरी नहीं है कि पहली दफा ही वो अलाइंड हो जाए. अगर अलाइंड नहीं होंगे तो आप टेप को दोबारा पील ऑफ कर लेंगे और फिर दोबारा इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वंस यू हैव इट अलाइंड, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम टेप का ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा रहने देते हैं. ठीक है, और दूसरे हिस्से जिस पे एपॉक्सी लगी, जिस पे गेज लगा होता है, उसको हम पूरी तरह से पील कर लेते हैं और फिर यहां पर हम एपॉक्सी डाल देते हैं. ठीक है, स्ट्रेन गेज के ऊपर हम एपॉक्सी डाल देते हैं और उसके बाद जो है हम दोबारा इस स्ट्रेन गेज और जो वो है क्या कहते हैं टेप जो है, उसको दोबारा हम प्रेस कर देते हैं सरफेस पे और फिर उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिकमेंडेड बाय द एपॉक्सी मैन्युफैक्चरर. ठीक है, ये चंद मिनट से लेके घंटे, इवन एक दिन, 2 दिन तक भी हो सकते हैं. ये इस टेक्निक की समझ आई है? अगर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं बताता हूँ. I'll try to explain it further. Students?
अरसलान आपकी आवाज नहीं आ रही। फहद, ओके ओके, ठीक है। फहद, एनी क्वेश्चन? सर ये हम ये परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली, ये मतलब लैब वगैरह में? आई एम नॉट श्योर। आपकी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब इस सेमेस्टर में है, फहद? नो सर। अच्छा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में। सो आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट दैट। आप लोगों ने उसमें स्ट्रेन गेजेस नहीं पढ़े जो सॉलिड मैकेनिक्स में, फहद? नहीं सर, उसका हमने कोई इस तरह लैब वगैरह नहीं परफॉर्म, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया था। अच्छा, ठीक है। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि इस सेमेस्टर तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब नहीं है और मुझे आई एम नॉट श्योर कि वी हैव एनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग strain gauges in that lab. I would recommend watch a YouTube video of how to install a strain gauge. ठीक है, तो आपको विजुअली क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। And if you have any question, you can then ask me and we can discuss that video, or we can have a general discussion regarding that. ठीक है? यस सर, इट वुड बी बेटर। Okay. So adhesive bond serves as mechanical and thermal coupling between the metallic gauge and the test specimen. Therefore, the strength of adhesive bond should be sufficient for the strain experienced by the test specimen, should have thermal conduction and expansion characteristics suitable for the application. Some common types of adhesives are epoxies, cellulose nitrate cement, and ceramic base cement. ठीक है, once we have, एक दफा अगर हमने ठीक है, once we have, हमने इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, epoxy लगा दिए, फिर हमने we apply pressure for certain period of time depending on the epoxy recommended, ठीक है। After that you will peel off the tape, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि टेप को peel off कर लेंगे, और चूंकि स्ट्रेन गेज पे एपॉक्सी लगी हुई है, टेप पे हम कोशिश करते हैं कि उस पर कोई एपॉक्सी ना लगे, तो स्ट्रेन गेज जो है वो मेटल सरफेस के साथ रह जाएगा, जबकि आपकी टेप जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्ट्रेन गेज के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। नाउ some people make a mistake that they directly connect the wires to the strain gauge, ठीक है। This is typically not recommended. The reason for that is that these wires may have significant weight, ठीक है, और मतलब ये बाजू का these wires can be up many feet long, 10, 20, 30 feet long, ठीक है। Now if they अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा गलती से इन वायर्स को खींच ले, या इवन अगर ये वायर जो है हवा में लटक रही हैं और उसकी वजह से जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर एक वेरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अगर ये वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है स्ट्रेन गेज के साथ, देन दिस, अगर इन वायर्स में कोई टेंशन मौजूद है, देन दीज वायर्स विल डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से एक फॉल्स स्ट्रेन ट्रेंड इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन करें कि ये स्ट्रेन गेज जो है एक स्पेसिमेन पे लगा हुआ है, जो कि स्पेसिमेन जो है टेबल पे पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, और उस स्पेसिमेन जो स्ट्रेन गेज के साथ जो वायर्स हैं वो लेट्स से 10 फीट लॉन्ग वायर्स हैं, वो इस टेबल से के साथ एक दूसरा टेबल जो कि 10 फीट पे पड़ा हुआ है, वहां पे आपका वी स्टोन ब्रिज पड़ा हुआ है, उसके साथ ये वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वायर्स जो है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, इसके ऊपर स्ट्रेन गेज, एक स्पेसिमेन है, उसके ऊपर स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, और ये वायर्स जो हैं दूसरे टेबल पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ा हुआ है,
ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड है। अब दरमियान में ये वायर जो है हवा में लटक रहे हैं। अब देयर इज ए चांस कि ये हिलें दीज वायर में, मतलब इसमें कोई हवा की वजह से या फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हिल रहे हैं। अगर ये हिलते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो है स्ट्रेन गेज के साथ जहां पे कनेक्टेड है उस पोर्शन को भी हिलाएंगे। इफ अगर वो पोर्शन हिलेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास एक फॉल्स स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होगा इस स्ट्रेन गेज में, ठीक है। मतलब स्पेसिमन इज नॉट एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रेन बट योर स्ट्रेन गेज विल शो यू द स्ट्रेन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीड्स अटैच करते हैं, ठीक है। सो रादर देन हमारी लीड वायर डायरेक्टली स्ट्रेन गेज को कनेक्ट हो, हम पहले कनेक्ट कर देते हैं इस, ठीक है, गैज टेप के साथ, और फिर यहां से हम एक दूसरा कनेक्शन लेके जिसमें हमने थोड़ा स्लैक छोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं जा रही वायर, बल्कि दरमियान में हमने थोड़ा स्लैक छोड़ा हुआ है, ठीक है। इस फॉर द रीजन, क्योंकि अगर ये वायर्स थोड़ी बहुत हिलें भी तो इस हिलने का इफेक्ट जो है, जो स्ट्रेन गेज की जो टैप है या गेज का जो एलिमेंट टैप है जहां पे हम सॉल्डरिंग करेंगे, उस तक हम चाहते हैं कि ना पहुंचे इसका इफेक्ट। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट वी डू द soldering इलेक्ट्रिकल soldering, ठीक है। और soldering के बाद जो है हम वी कोट द गेज, ठीक है। नाउ दिस इज important part of gauge installation. Once you have applied the gauge, आपने इंस्टॉल कर लिया, और मतलब you have epoxied or bonded the gauge to the surface, and then you have connected your electrical wires using the soldering process, ठीक है। The last step is to put some protective coat on the strain gauge, ठीक है। तो वो भी टिपिकली एपॉक्सी की तरह की चीज होती है, वो हम उसके ऊपर डाल देते हैं ड्रॉपर की मदद से, और ओवर टाइम जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और देन इट विल प्रोटेक्ट द स्ट्रेन गेज फ्रॉम most importantly water or moisture, and it will also protect it from physical, to some extent it will protect it from physical harm, ठीक है। क्योंकि if अगर फॉर एग्जांपल देखें, जो बहुत से इंस्ट्रूमेंट में जब हम स्ट्रेन गेजेस लगाते हैं, दे आर देयर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं, सो प्रॉब्ली यू अप्लाई स्ट्रेन गेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेन गेज अप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट लेट सपोज वो एक लोड सेल है एंड इट इज इंस्टॉल्ड ऑन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी लाइफ जो है 15 years है, so you want the strain gauge to be functional or to be protected for 15 to 20 years, ठीक है। सो दैट्स वाई इसके ऊपर हम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर हम कोटिंग नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज द मॉइस्चर जो है वो सीप इन कर सकते हैं, और आपकी आइदर बॉन्डिंग या जो स्ट्रेन गेज है उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो चले मैं आपके लिए खुलासा दोबारा कर लेता हूँ। हमने the installation process of a strain gauge requires that you thoroughly clean the surface on which you will install the strain gauge, ठीक है। और next step, part 2 जो है, step 1 is thorough cleaning, step 2 is proper alignment and bonding of the strain gauge, ठीक है। यानी you have to make sure कि strain gauge का जो एक्सिस है वो correspond कर रहा है उस एक्सिस को कि जिस एक्सिस पे आप स्ट्रेन मेजर करना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके लिए हमने वो प्रोसेस देखा था कि आप टेप के ऊपर लगाते हैं और उसकी मदद से आप
स्ट्रेन गेज की अलाइनमेंट सेट करते हैं और फाइनली आप स्ट्रेन गेज के ऊपर एपॉक्सी लगा के उसको परमानेंटली फिक्स कर देते हैं टेस्ट स्पेसिमेन सैंपल सरफेस के साथ। एक दफ़ा ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक सॉल्डरिंग एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सॉल्डरिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्टली आप जो आपकी लीड वायर्स हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट ना करें स्ट्रेन गेज के साथ, रादर दरमियान में आप सॉल्डरिंग टैब यूज कर लें ताकि लीड वायर्स के अंदर जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो जो है जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगी लीड वायर्स वो आपकी स्ट्रेन गेज को इफेक्ट ना करें और आपकी स्ट्रेन गेज मेजरमेंट्स को इफेक्ट ना करें। और फाइनली हमने डिस्कस किया कि एक दफ़ा आपकी स्ट्रेन गेज जो है आपने इंस्टॉल कर दिया है और उसके ऊपर उसके साथ आपने इलेक्ट्रिक वायर्स भी सॉल्डर कर दिए, फिर आप उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट डाल देते हैं टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेन गेज फ्रॉम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यूज। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अच्छा नाउ जी अच्छा, so now we will discuss another issue with strain gauge। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया पॉइजन रेशियो। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद पॉइजन रेशियो? Yes, sir. ठीक है, so so what I have told you that if this is our typical strain gauge, it is designed such that अगर आप इस किसी सरफेस के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको इस सरफेस के ऊपर लगा देता हूं, सरफेस के ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रेन गेज विल मेजर द एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि जब आप इस सैंपल मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, इट विल एक्सपीरियंस ऑन दिस सरफेस, इट विल एक्सपीरियंस नॉट ओनली एक्सियल स्ट्रेन बट इट विल आल्सो एक्सपीरियंस lateral strain। ठीक है, and of course the strain gauge will also experience lateral strain, but the strain gauge is designed by the manufacturer that the effect of lateral strain is insignificant. It is designed. It doesn't mean that lateral strain doesn't exist. It doesn't mean that the strain gauge doesn't experience lateral strain. It's just that the strain gauge is designed in such a manner that the lateral strain, the output of the strain gauge nullifies the effect of the lateral strain. Okay? Now this is for a in theoretical case. Okay? Of course, the manufacturer want to design a strain gauge which is completely insensitive to the lateral strain. But in reality, the strain gauge will have some error due to lateral strain. Okay? Now, how do we understand this thing? Okay? So by design, the manufacturer designed the strain gauge in such a way that the lateral strain is neglected for a material having a Poisson ratio of let me see exactly, 0.27. Okay, let's 0.285. Okay, so if you apply the strain gauge on a material that has a Poisson ratio of 0.285, then you don't have to worry about error due to lateral
strain or error due to lateral sensitivity, because the manufacturer has designed the strain gauge in such a way that for this Poisson ratio material, if you apply the strain gauge on a material having this Poisson ratio, the effect of the lateral strain is neglected. Now, this is a Poisson ratio of steel. Now, if you apply the strain gauge on any other material that has a Poisson ratio different than 0.285, then you have to calculate the lateral calculate the lateral error or error due to lateral sensitivity. इस बात की समझ आ रही है students? Ask me a question if you don't understand that. Are they clear? ठीक है? अच्छा. So let me go. एक मिनट जी. So if you look at, you can find lateral error either using this formula, or you can find lateral error using this plot. ठीक है, दोनों से आपके पास रिजल्ट सेम आएगा. इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें, दिस इज ट्रांसवर्स सेंसिटिविटी, यू कैन कॉल इट लैटरल सेंसिटिविटी. ठीक है, नाउ दिस इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, डेटा शीट में हर स्ट्रेन गेज के लिए डिफरेंट होगा. दिस इज योर पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल जिसके ऊपर आपने स्ट्रेन गेज अप्लाई किया है. ठीक है, दिस इज पॉइजन रेशियो, द रेफरेंस पॉइजन रेशियो विच इज 0.285, रेफरेंस पॉइजन रेशियो विच इज 0.285. ठीक है, and KT is again your transverse sensitivity. Just give me one moment. मैं थोड़ी देर में आता हूँ. I need to. चलें, I'm sorry for the delay. So, is it clear now? ये फार्मूला क्लियर है, इसको कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स? अरसलान,
यस सर, अगर हमारे पास जो लेटरल सेंसिटिविटी गिवन हो और हमारे पास जो है ना वो एक बिना लेटरल स्ट्रेन भी गिवन हो और साथ ही वो हमें साथ ये ये लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन बेसिकली उस मटेरियल की पॉइजन रेशियो है जिस पे आपने अप्लाई किया है स्ट्रेन गेज. सो यू डोंट नीड लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन की वैल्यू. ठीक है, यू जस्ट नीड द पॉइजन रेशियो ऑफ दैट मटेरियल. ठीक है, ओके सर. चलिए अब हम जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं. अच्छा, resistance strain gauge experience change in resistance when it is subjected to a strain. The amount of resistance change depends on how the gauge is deformed, the material from which it is made, and the design of the gauge. The resistance strain gauge forms the basis for a variety of other transducers such as load cells, pressure transducers, and torque meter. Pressure transducer अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डायफ्राम रोजेट के दौरान डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज प्रेशर ट्रांसड्यूसर. ठीक है, अच्छा. लोड सेल क्या होता है? लोड सेल आप में से किसी को पता है? लोड सेल का नाम सुना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स? नहीं सर. अच्छा, लोड सेल जो होता है दिस इज बेसिकली फोर्स मेजरमेंट. ठीक है, force measurement instrument, and typically it utilizes a strain gauge. A simple example क्या हो सकती है? For example, ये एक रॉड है. ठीक है, एक रॉड है जो कि छत के साथ अटैच. ठीक है, और इस रॉड के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक अननोन फोर्स अप्लाई करता हूँ. ठीक है, और इस रॉड के ऊपर मैं स्ट्रेन गेज कनेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, स्ट्रेन गेज को मैं एक ओम मीटर के साथ या व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट करके मेरे पास चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, उससे मैं किस चीज की वैल्यू मालूम करूंगा? स्ट्रेन की वैल्यू मालूम करूंगा. स्ट्रेन से मैं स्ट्रेस की वैल्यू मालूम करूंगा. स्ट्रेस से मैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता हो तो मैं फोर्स की वैल्यू मालूम करूंगा. सो दैट्स हाउ आई फाउंड फोर्स. ठीक है, दिस इज योर वेरी बेसिक लोड सेल. अब क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है, इसी तरह जी. हाँ, रेट रॉड के ऊपर हम स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं. ठीक है, इसी तरह हम जो है टॉर्क मीटर्स भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मेरे ख्याल में मैकेट्रॉनिक सेंसर का जो चैप्टर है उसमें हम टॉर्क मीटर भी पढ़ेंगे. ठीक है, टॉर्क मेजरमेंट्स. अच्छा, metallic strain gauges, ये जो है मतलब we have already discussed that this is called the grid, strain gauge grid. ठीक है, ये हमारे पास soldering connections हैं. फिर bottom layer top layer, अगर आपके पास this length is called gauge length. ठीक है, and so on. यानी ये different nomenclature है, ये आप खुद देख लें. ठीक है, अच्छा. Metallic strain gauges, metallic strain gauges are photo etched metal foil. ठीक है, plastic backing. Gauge length is the resolution of the strain gauge. In order to accommodate varying application of strain gauge, come in design variation in backing material, grid configuration, bonding technique, and total gauge. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, now a metallic strain gauge. ठीक है, ये we'll discuss that later. These are different types of rosettes. ये भी हम discuss कर चुके हैं. ठीक है, this is the lateral sensitivity, error due to lateral sensitivity. ठीक है, और उसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं. Now, चलें, do you have any question? This concludes the metal strain gauges, construction and application. Now I'm going to start semiconductor strain gauges, but दो तीन स्लाइड ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक स्लाइड है. If you have any questions so far, you can ask me now, students.
ठीक है. So semiconductor strain gauges. Silicon crystals are the basic material for semiconductor strain gauges. The crystals are sliced into very thin section to form a strain gauge. Mounting of a semiconductor strain gauge required backing and adhesive techniques similar to metallic strain gauges. So application or mounting of the semiconductor strain gauge is very similar to the metallic strain gauges. Advantages compared to metallic strain gauges. ठीक है, compared to metallic strain gauge, semiconductor के advantages क्या है? Very large gauge factor. Gauge factor क्या चीज़ है? Sensitivity है. So semiconductor, just like a thermistor, has very high sensitivity compared to RTDs. Similarly, semiconductor strain gauges have very high sensitivity compared to metal strain gauges. ठीक है. Has higher resistance. ठीक है. Higher resistance is useful in the sense that you can ignore lead resistances. Longer fatigue life. Fatigue life का मतलब क्या है कि if you have varying stresses or force or strains, so if you have strain cycles, then semiconductors are better suited. Semiconductor strain gauges are better suited compared to metallic strain gauges, and it has lower hysteresis and can be made very small. So unlike metallic strain gauges, semiconductors can be made very small. The disadvantage of semiconductor strain gauges compared to metallic strain gauges, just like it's very comparable to advantages and disadvantages of RTDs with of thermistor with RTDs, because thermistor is a semiconductor device and an RTD is a metallic device. Similarly, just like that, one of the big disadvantage of semiconductor strain gauge is that its output is non-linear, is highly non-linear, and the gauge factor can be markedly dependent on temperature. This one can be problematic. Typically हमारे पास जो strain gauges होते हैं, जैसे metallic strain gauges जो typically आपको market में मिलते हैं, they have a single gauge factor value, typically around 2. ठीक है, उनका typical gauge factor value is around 2. ठीक है. Now the gauge factor of a semiconductor device, ठीक है, may be even 200 or even larger. So there is almost 200 times difference, actually 100 times difference between the two. But the problem with this gauge factor of semiconductors is this gauge factor is a relatively stronger function of temperature compared to this gauge factor. Okay? And that's how this equation will compute you the gauge factor of a semiconductor device at a temperature other than reference temperature for that semiconductor strain gauge reported by the manufacturer. इस बात की समझ आ रही? देखें जो हमारे सर इसके रीजन क्या है सर, मतलब ये क्या वजह है? सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, सेमीकंडक्टर मटेरियल इसकी सेंसिटिविटी डिफॉर्मेशन के लिए भी ज़्यादा है, और हमने जो थर्मिस्टर में पढ़ा था सेमीकंडक्टर मटेरियल की सेंसिटिविटी टेम्परेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. So because of the semiconductor nature of the material, it is अच्छा चलें, let's revise जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस चेंज जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है? किसी को याद है? नॉन लीनियर है. और मेटालिक का लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर. ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियर. तो इसका मतलब क्या है कि देखें, जब हम अगर आप सिंपल आरटीडी को ले लेना और उसको आप
एज ए सेमीकंडक्टर के तौर पे, अगर आरटीडी मटेरियल ले लें उसको सेमीकंडक्टर के तौर पे सॉरी स्ट्रेन गेज के तौर पे यूज करने की कोशिश करें, यू विल गेट सम रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। कहने का मेरा मतलब ये है कि यू हैव ए, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल टेम्परेचर मेजरमेंट और स्ट्रेन मेजरमेंट का एक है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि चाहे मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, if it will experience change in temperature, it will experience, that will result in change in resistance, ठीक है। or if it will experience change in length, either it's a metal or a semiconductor, it will experience change in length, change in resistance because of change in length, ठीक है। now you can use it either as a temperature measurement or as a strain measurement device. If you want to use it as a temperature measurement device, either you would try to make sure that that same sensor doesn't experience any if you want to use it as a temperature measurement device, you will make sure that the sensor doesn't experience any strain while you are measuring temperature. Or if you want to use it as a strain device, strain measurement device, you will try to make sure that it doesn't experience any temperature change, because the output of that device is function of both temperature and strain, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है? Now the problem, the reason why we can get away with metal strain gauges related to temperature is that, first of all, the relationship between temperature and resistance of a metal, or at least the strain gauge material that we use, is linear. So the effect of temperature on the strain gauge measurement is temperature change on the strain gauge measurement is, even if there is a change, it is still a linear change and it is relatively smaller change. But in semiconductor case, the relationship between temperature change and resistance change is non-linear. So, and also the sensitivity of semiconductor is higher for temperature change. So when you are conducting an experiment, a strain measurement experiment, you have to take into account the temperature at which you are conducting the experiment, plus whether it's a metal strain gauge or a semiconductor strain gauge, you would like to make sure that during your experiment no temperature change takes place, or you will try to minimize the variation in temperature during your experiment, okay? Otherwise, your experimental data may have, your experiment result will be a function of both strain change as well as function of temperature. इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। देखिए मैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा आर ओवर आर is a function of strain and temperature, ठीक है। सो अगर मैंने इस डिवाइस को स्ट्रेन गेज के तौर पे यूज करना है, देन आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि टेम्परेचर वेरिएशन नेग्लिजिबल हो, सो दैट द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस is only a function of strain because temperature is constant. समझा रही इस बात की? On the other hand, if I want to use this device as temperature measurement device, then I'll try to make sure that during my experiment or during my measurement, there is negligible change in strain, so that delta R by R is only a function of temperature. ठीक है? मतलब जो चेंज आ रहा है डेल्टा आर की, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से चेंज आ रहा है। समझा रही इस बात की? नाउ जो गेज फैक्टर
सेंसिटिविटी जो हमें गिवन है सेमीकंडक्टर की सेंसिटिविटी जो होती है इससे स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि गेज, अगर एक सेमीकंडक्टर गेज है, अगर वो उसका गेज फैक्टर लेट्स सपोज 200 है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि इसका गेज फैक्टर जो है 200 है एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सी। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं at 25 degree C, so I can directly use the gauge factor of 200. लेकिन अगर मैं अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं at temperature of 45 degree C, then I have to take into account, I have to correct the gauge factor, और उस gauge factor को correct करने का फार्मूला क्या है, वो ये है, ठीक है। This is my 200, this is 25 degree C, this is 45 degree C. This is some constant given by the manufacturer of the strain gauge. Again, reference temperature, experiment temperature, and the strain value expected. ठीक है, यह जो strain value हमने gauge factor से मेजर किए initially. Clear है ये? Okay. Now, strain gauge electrical circuits, अब हम strain gauge का जो आउटपुट है वो हम मेजर कैसे करेंगे? टिपिकली हम मेजर करते हैं with the help of a V-stone bridge, not with a ohm meter. उसकी रीजन क्या है? Typical strain gauge sensitivity on the steel specimen is in the order of 10 raised to the power minus 6 ohm per kilonewton per meter square. Commercially available equipment can measure changes in gauge resistance of less than, ठीक है, 0.005 ohm, ठीक है. Still it is way higher than 10 raised to power minus 6 ohm, ठीक है. For that reason we use a V-stone bridge, ठीक है. और V-stone bridge की लास्ट टाइम हमने ये वाली डिराइवेशन की थी, इफ यू रिमेंबर, याद है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला तो याद है ना, कि डेल्टा E इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस R3, हाँ, माइनस R3 डिवाइड बाय R3 प्लस R4, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब now what we do is हम कहते हैं इस फार्मूले में हम कहते हैं कि R1 changes to R1 प्राइम, ठीक है, और R1 प्राइम किस चीज के बराबर है? R1 प्राइम हम कहते हैं कि इस फार्मूले में इनिशियली तो ब्रिज बैलेंस्ड है, देन R1 changes from R1 to R1 prime, where R1 prime is equal to R1 plus delta R, ठीक है. सो हर जगह ये R1 प्राइम हो जाएगा और फिर हर R1 प्राइम में हम वैल्यू डाल देते, ठीक है. यहां पर भी R1 प्राइम होना चाहिए, अच्छा, दिस शुड बी R1 प्राइम, ठीक है. When you solve for it, ठीक है, when you solve this equation, you end up with this. ठीक है. Now, which is that the output of the Wheatstone bridge, change in output of the Wheatstone bridge with respect to input voltage EI is equal to change in resistance over resistance, ठीक है. मतलब अगर यहां पर आपने R1 को आपने रिप्लेस कर दिया स्ट्रेन गेज की मदद से, तो चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 4 plus 2 into change in resistance over resistance. If delta R over R is very small,
then we can approximate this equation to be equal to delta R by R over 4. Okay? Now, now we know we defined the sensitivity of the strain gauge factor is equal to Y, which is output, is delta R by R divided by input to the strain gauge, which is delta L by L. Now, delta L by L is strain, or we can write it as delta R by R is equal to strain into gauge factor. Okay? So you can replace delta R by R with gauge factor into strain. Okay? So हमारे पास ये equation आ रही. So this is a simple equation for measurement of strain from the change in resistance of the strain gauge. Okay? Any question, students? जी जी पूछे. बिल्कुल यूज कर सकते आप कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है, टिपिकली जब आप स्ट्रेन मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस इतना स्मॉल होगा कि आप बेशक अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका ओहम मीटर इतना सेंसिटिव नहीं होगा कि वो आपके लिए, क्योंकि जो मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ओहम मीटर इस वक्त पड़े हुए हैं, दे कैन नॉट मेयर लेस देन 1 ओहम. ठीक है? So delta R by R आपका माइक्रो ओहम्स में होगा, मिली ओहम्स में भी नहीं होगा. So of course you can do your calculations, और अगर आपको पता चले कि आपका चेंज इन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, और हाँ, और उस रेजिस्टेंस के लिए आपके पास ओम मीटर मौजूद है जो कि उतना चेंज इन रेजिस्टेंस वो आसानी से मेजर कर सके, बिल्कुल अच्छा है, बेहतर है, इट्स द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा वो इतना छोटा होगा कि, और आपको मार्केट में उस स्मॉल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको ओम मीटर नहीं मिलेंगे, तो आप मजबूरन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे. ठीक है? ओके. So this is an example, or this will conclude our lecture for today. And the example is a strain gauge having a gauge factor of 2. This is your gauge factor. Okay? Is mounted on a rectangular steel bar having modulus of elasticity as 200 gigapascal. Okay? As shown in figure 11.11, the bar is 3 centimeter wide, okay, and 1 centimeter high. So this is 3 centimeter and this is 1 centimeter. Okay. So हमारे पास cross sectional area X is equal to 3 centimeter multiply 1 centimeter is equal to 3 centimeter square. ठीक है? Is subjected to a 30 kilonewton force. So F is equal to 30 kilonewton. Determine the resistance change of the strain gauge if the resistance of gauge was 120 ohm in the absence of axial load. So जो आपकी R0 value जो है वो है 120 ohm. In the absence means before the load was applied, the gauge resistance or R0 value was equal to 120 ohm. ठीक है? In the absence of axial load. Okay, so हमसे क्या determine the resistance change of the strain gauge. So resistance change of the strain gauge क्या होगा? Let's see it. चूंकि हमारे पास so चले resistance change क्या होगा? Let's start with gauge factor.
gauge factor is equal to 2, but gauge factor is equal to delta R over R नॉट ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें हमारे पास गेज फैक्टर की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास ये हमने मालूम करना है, सो वी नीड द स्ट्रेन वैल्यू। ठीक है, so we need the strain value. Now we can get strain value from the Hooke's law, where sigma divided by modulus of elasticity से हमारे पास जो है सिग्मा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमारे पास जो है स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। अब स्ट्रेन की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, और स्ट्रेस किस चीज के बराबर है? नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्स फोर्स हमारे पास गिवन है 30 किलो न्यूटन, एरिया हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमने स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, हमारे पास डेल्टा आर बाय आर नॉट की वैल्यू आ गई। उसमें हम आर नॉट की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो है डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, अभी जो थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ओम मीटर यूज कर सकती हैं नहीं, तो देखें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने एक रफ कैलकुलेशन की है और ये आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। अब इस डेल्टा आर की वैल्यू को आप यूज करेंगे चेक करने के लिए कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें। अगर डेल्टा आर की वैल्यू जो आपके पास अवेलेबल ओम मीटर है, अगर डेल्टा आर की वैल्यू उस ओम मीटर की मेजरमेंट रेंज से बहुत कम है, then of course you cannot use ohm meter and you will have to use the Wheatstone bridge। अगर वो उस ओम मीटर की रेंज के अंदर आता है, अगर आपके पास कोई दूसरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि उस रेंज के अंदर आपकी डेल्टा आर की वैल्यू आती है उसकी इनपुट रेंज के अंदर, then of course you can use that instrument। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं क्योंकि अभी ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सपोज द स्ट्रेन गेज डिस्क्राइब्ड इन एग्जांपल 11.3 is to be connected to a measurement device capable of determining a change in resistance within uncertainty of 0.005 ohm at 95% confidence level. This stated uncertainty includes a resolution of 0.001 volt. This is voltage resolution. What uncertainty in stress would result when using the resistance measurement device? ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि डेल्टा आर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, फॉर एग्जांपल हम डेल्टा आर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज उसके अंदर जो भी वैल्यू आ गई, लेट्स कॉल उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है प्लस माइनस 0.005 ओम है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी अगर आपके रेजिस्टेंस मेजरमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी आ रही है तो आपके स्ट्रेस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? ठीक है, इस बात की समझ स्टूडेंट? आस्क मी अ क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रही। यस सर, ये समझ आ रही। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अभी जो पिछले एग्जांपल में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पे हमने स्ट्रेन गेज लगाया हुआ, उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जब ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है दिस फोर्स रिजल्ट इन स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस फोर्स इज unknown या whatever, ठीक है, it results in some stress।
लेकिन अब ये स्ट्रेस हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। हम कैसे मेजर करेंगे ये स्ट्रेस? हमारे पास स्ट्रेन गेज से हमारे पास डेल्टा आर बाय आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेन मालूम करने के लिए, और स्ट्रेन को हम कन्वर्ट करेंगे हुक्स लॉ यूज करके स्ट्रेस मालूम करने के लिए। ठीक है, यहां पर हम गेज फैक्टर का फार्मूला यूज करेंगे। गेज फैक्टर का फार्मूला क्या है? डेल्टा आर बाय आर नॉट डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी, और फिर स्ट्रेन की वैल्यू हम यूज करेंगे हुक्स लॉ में, विच इज सिग्मा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। इससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हो स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन हम कैलकुलेट करें और स्ट्रेन के लिए हम जो है हमें रेजिस्टेंस डेल्टा आर की वैल्यू मेयर करनी है। अगर उस मेयरमेंट के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी हो तो स्ट्रेस के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, यानी स्ट्रेस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी? अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेस विल बी हाउ मच? समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें हमारे पास अनसर्टेनिटी इन, अब हम क्या करें कि हम स्ट्रेस का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर लिखेंगे। सो वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, and we know that strain is equal to we know that strain is equal to strain in terms of gauge factor, strain की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय गेज फैक्टर। ठीक है, डेल्टा आर बाय आर इंटू गेज फैक्टर। ठीक है ना यहां तक? यस सर। ठीक है, now if I want to find out find out uncertainty in sigma, ठीक है, now we know that uncertainty in delta r, so if I write it more precisely, so sigma is equal to sigma bar plus uncertainty in sigma is equal to E multiply delta R bar plus minus uncertainty in delta R, ठीक है, divide by R divide by gauge factor। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी इन सिग्मा का फार्मूला क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन सिग्मा का फार्मूला होगा partial derivative of sigma with respect to with respect to delta R, ठीक है, into uncertainty of delta R whole square under root। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला रह जाएगा। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। ठीक है, दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर। सो लेट मी गिव यू समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। ठीक है, सबसे पहले वी डिस्कस कि स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं मेजरमेंट, एक फील्ड मेजरमेंट है, दूसरी जो है हमारे पास पॉइंट मेजरमेंट है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि पॉइंट मेजरमेंट में वन ऑफ द मेथड इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज मेजरमेंट। ठीक है, और फिर इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के मौजूद है, वन इज
metallic strain gauges, the other one is semiconductor strain gauges. फिर हमने metallic strain gauges के पूरी जो डिटेल है, कंस्ट्रक्शन डिटेल, उसके जो different metallic strain gauges के जो system है, let's call it a system, ठीक है, which includes the metal wire or foil, the backing material and the adhesive. उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. Then we discussed the application, how to apply a strain gauge on any item whose strain you want to measure, surface strain you want to measure. Then we discussed about the semiconductor strain gauges. ठीक है. We discussed advantages and disadvantages of semiconductor strain gauges compared to metallic strain gauges. Then we also discussed the lateral sensitivity of strain gauges. We also discussed the gauge factor dependence, the dependence of gauge factor of semiconductor strain gauge on temperature. And finally, we did a few examples regarding strain gauges, the last one of which, example 11.4, was basically uncertainty propagation example in terms of strain gauges. Do you have any questions, students? कोई question है आपके? No, sir. चलें. That concludes our lecture for today. सर एक क्वेश्चन है